Hello students, this is the continuation of the previous video of chapter 14. In the previous video, we learned about the continent Africa. Now, here we are going to study regarding Asia, the biggest continent in which we live. So open page number 113. Asia. Now below the pictures are given of wonders of Asia. First is the Taj Mahal that is in India, the Great Wall of China, and Burj Khalifa that is in Dubai. There is a section in the exhibition providing information about our continent Asia in the tourism fair. Let us go and know about Asia. तो एक एक सेक्शन एग्ज़िबिशन ऐसा भी था, एक सेक्शन एग्ज़िबिशन का ऐसा भी था जो हमारे कॉन्टिनेंट एशिया के बारे में माहिती प्रोवाइड कर रहा था टूरिज़्म फेयर में। तो अब हम एशिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लोकेशन लैटिट्यूड 1 डिग्री 16 नॉर्थ टू 77 डिग्री 43 नॉर्थ एंड लॉन्जिट्यूड that is 26 degree 04 east to 169 degree 40 west. Boundaries: the Indian Ocean in the south, the Pacific Ocean in the east, the Arctic Ocean in the north, Europe in the northwest, and Africa in the southwest. So the location, that where is Asia located? So it is the latitude and longitudes are given. Then in the south, that is boundaries are there. That is south, it is the Indian Ocean. In the east is the Pacific Ocean. North is the Arctic Ocean. Europe in the northwest and Africa in the southwest. Then what is the area? The area is 4 crore 45 lakh 79,000 square kilometer. Now turn your page number 114. The physical features of Asia are full of diversity. We find mountains, plateaus, deserts, and plains here. See the pictures given below and locate them on a map of Asia. So below the pictures are given of Mount Everest, which is the highest peak in the world, and the height is 8,848 meters. Then Tibet is there, which is the roof of the world. It is the biggest and the highest plateau. Then the area which receives maximum rainfall, and there's another picture is regarding the plains of Siberia which are covered with snow, that is Varkoyans. So फिज़िकल फीचर्स है एशिया, उसमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी। सब कुछ है यहाँ पर, पहाड़ यानी माउंटेन्स है, प्लेटोज़ है, डेजर्ट है, प्लेन्स यानी मैदान है। यहाँ पे ये तस्वीर दिखते हैं, वो दिखाती है कि जगह में एशिया के मैप में कहाँ पर स्थित है। नाउ पेज नंबर 115. Fill in the table by using atlas or by observing the given map. Here the table is given. You have to write the highland, the plains, and the group of islands. So if we write first, suppose India, that the plains are Sikkim and the group of islands are Philippines Islands. Then Iran, plains Irrawaddy, Andaman Nicobar Islands. So like this we have to write the information. Now deserts. Major deserts located in Asia are the Gobi Desert, the Arabian Desert and the Thar Desert. तो 3 तरह के डेजर्ट एशिया में लोकेटेड है, गोबी, अरेबियन एंड थार डेजर्ट. Below the picture of desert of Kutch and Gobi desert are given. Then the lakes are given, pictures of lakes are given, the Dal Lake which is in Kashmir and the Dead Sea. And a question is given that why can't one drown in the Dead Sea? That is, उसमें कोई डूब क्यों नहीं जाता है, डेड सी में कोई डूबता क्यों नहीं है.
तो उसका कारण है कि डेड सी जो है वो सॉल्टीएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे खारा पानी वाला लेक है। द सैलिनिटी ऑफ इट्स वाटर इज़ 8 टाइम्स द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। उसकी जो सैलिनिटी है, जो खारा पानी है, वो 8 टाइम्स सी वाटर से ज़्यादा है। इट्स डेंसिटी इज़ मोर देन द डेंसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी, अपना ह्यूमन शरीर, मानव शरीर होता है, उसकी डेंसिटी से उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, मटीरियल विथ लेस डेंसिटी देन वाटर डू नॉट सिंक इन इट बट फ्लोट अपॉन इट। और साइंटिफिक प्रिंसिपल के आधार पे जो चीज़ की डेंसिटी कम है वो पानी में डूबती नहीं है, बल्कि वो पानी के ऊपर तैरती है। और यही कारण है कि डेड सी में कोई भी मनुष्य, कोई भी आदमी डूबता नहीं है। नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 116। Climate. The climatic map of Asia is given below. Here below the climatic map is given, the different colors are given, and what does that color indicates is given in the left hand side corner of the map. Yellow color shows less rain. Then pink color shows winter rain round the year. Green color shows yearly rain. And last brownish color shows annual rain. Then find out the places in Asia that receives the maximum and minimum rainfall. So the places that receive the maximum rainfall in Asia are Mevaswaram and Cherrapunji in the state of Meghalaya in India. And the places that receives the minimum rainfall, come rainfall, are the desert region of Central and West Asia. Then second is, find out the places in Asia that experience the maximum heat and maximum cold. The place that experience maximum heat is Jacobabad city of Pakistan, and the place that experiences the maximum cold is Verkoyang city of Siberia. Now page number 117. Rivers. The rivers like the Ob, the Yenisei, the Lena, Amur, Hevengo, Yangtze-Kiang, Mekong, Irrawaddy, Brahmaputra, Ganga, Yamuna, the Sindhu, etc. are in Asia. So ये सब नदियाँ एशिया में आती है. Apart from this, many other rivers are shown in the map. इसके अलावा और सारी नदियाँ भी हैं जो मैप में आपको मिल जाएगी, और ये कहाँ से नदी निकलती है और कौन से समुद्र में जाके मिलती है, ये सब आपको ये नीचे दे जो मैप है उसको आप में लिखने का है. That is, from where does the river originate and which sea does it flow. So below the map the table is given. In that table you have to write the information. Now first is the Ganga. This Ganga, what sea does it flow into? So it flows into Bay of Bengal in Indian Ocean. The Lena, the Arctic Ocean. The Tigris in the Indian Ocean. The Sindhu, the Arabian Sea in Indian Ocean. Now turn your page, page number 118. Here the table is given where saltwater lakes and sweetwater lakes, names are given of these lakes. Saltwater lakes are the Caspian Sea, the Dead Sea, the Chilka Lake and the Pulicat Lake. Sweetwater lakes are Lake Baikal, Wular Lake, Dal Lake, Debar Lake, Tonle Sub Lake and Dongting Lake, that is in China. Then below, as per the map of Asia, pictures of different types of vegetation are given, where you have to write the name of the country or the region below it. The first picture is regarding the seasonal rainforest. Second, that is thorny vegetation of desert region. Third is dry vegetation of desert region. The fourth is vegetation of equatorial region.
Below fifth is equatorial vegetation. Then vegetation of coniferous forest, vegetation of cold region, and the last is vegetation of South and Southeast Asian coastal region. So like this, you have to write the names of the vegetation according to the pictures. Then the table of the animal kingdom is given. Animals that are found in the cold region, the domestic animals, animals that are found in the hot desert area, aquatic animals that lives in water. Now page number 119. People of Asia. 50% of the total world's population resides in Asia. The people of Northern Asia are non-vegetarian. The people near coastal areas eat seafood, and the people living in the seasonal climate use wheat and meal. तो 50% तक की पॉपुलेशन पूरी दुनिया में जो है वो एशिया में रहती है। नॉर्थ एशिया के लोग नॉन वेजिटेरियन है, यानी कि शाकाहारी है। जो दरिया किनारे के पास रहते हैं वो सी फूड खाते हैं, और जो लोग सीजनल वेदर, मौसमी वेदर में होता है उसके अकॉर्डिंग वो लोग वीट और मिल्क खाते हैं। नाउ बिलो द पिक्चर्स आर गिवन of the persons, and you have to write the name to which country they belong. Now turn your page number 120, housing. Observe the pictures given below and find out where in Asia do we find such houses. Write the information in the notebook. Now below the pictures are given of houses, and you have to write that in which area such are found. The pictures are given. The second picture is the house of heavy rainfall, which is in equatorial region, so that when the rain falls, the water comes down. Then the neighboring countries of India. The group of countries that is India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Myanmar and Sri Lanka is known as the Indian subcontinent. Its strategic and geographical location stands distinctively in Asia. हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ आती है ये सब ये कंट्रीज़ है। टोटल मिलाकर 7 कंट्रीज़ है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाती है। इनकी जोग्राफिकल लोकेशन पूरी तरह से एशिया में ही आती है। नाउ विल स्टडी द फर्स्ट, दैट इज़ पाकिस्तान. Pakistan is our neighboring country. It declared itself an Islamic nation after it attained independence along with India. Its capital is Islamabad. Khyber Pass, which is in the Hindu Kush range, is located in Pakistan. The perennial river Sindhu has enabled the green revolution in Pakistan. Cotton is the most important crop of Pakistan. तो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। ये अपने आप को इस्लामिक नेशन कहलाता है जब से ये इंडिया से अलग हुआ इंडिपेंडेंस के बाद। इस्लामाबाद उसकी राजधानी कैपिटल है। खैबर पास जो है, जो हिंदू कुश रेंज में आता है, वो पाकिस्तान में है। जो सिंधु नदी है जो कभी भी सूखती नहीं है, उसी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन हो पाया है। कॉटन पाकिस्तान का इम्पोर्टेंट क्रॉप है। नेक्स्ट इज बांग्लादेश. बांग्लादेश इज वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ एशिया. Bangladesh is formed of delta and alluvial soil. The Ganga and the Brahmaputra, the major rivers of Bangladesh, are the major waterways in Bangladesh. Rice and jute are produced in abundance in Bangladesh. The capital city Dhaka is famous for its jute industry. सबसे ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ ऑफ एशिया में बांग्लादेश आता है। ये डेल्टा और एलुवियल सॉइल से बना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र उनकी मुख्य नदियां हैं। बांग्लादेश की यही मेन वाटरवेज बनते हैं
बांग्लादेश के अंदर। राइस और जूट की खेती बहुत ज़्यादा होती है बांग्लादेश में। ढाका उसका कैपिटल है और ये जूट इंडस्ट्री के लिए फेमस है। नेक्स्ट इज नेपाल। Lying in the Himalayan ranges, Nepal is a landlocked country. Its capital is Kathmandu. 40% area of Nepal is forest, and thus only 16% of land is cultivable. Crops grown here are rice, tea, cotton, and cardamom. नेपाल हिमालय रेंजेस में आता है। उसे हम लैंडलॉक्ड कंट्री कहते हैं, यानी चारों तरफ से ज़मीन से बंद है। काठमांडू उसका कैपिटल है। 40% तक का एरिया नेपाल का जंगल है और 16% ज़मीन ऐसी है जहाँ पर खेती हो सकती है। यहाँ पर फसल बोई जाती है, खेती की जाती है। राइस, टी, कॉटन और इलायची यहाँ पे उगाया जाता है। कार्डमम यानी इलायची। भूटान, द ब्रिटिशर्स कॉल्ड इट द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन. It is surrounded by mountains and hills which hampers its development. Still, Bhutan is developing with the help of India. Buddhism is a major religion followed here. Yak is the distinct animal found here. Thimphu is its capital. ब्रिटिशर्स ने इस भूटान की ज़मीन को नाम दिया थंडर ड्रैगन। चारों तरफ से ये पहाड़ों और पहाड़ियों से घिरी हुई है, जिसकी वजह से उसके डेवलपमेंट में मुश्किलें आती हैं। लेकिन भूटान तरक्की कर रहा है इंडिया की मदद से। यहाँ का मुख्य धर्म बुद्धिज़्म है। याक यहाँ का एनिमल है और टिम्फू यहाँ का कैपिटल है। श्रीलंका। This island was known as Ceylon and Sihaldweep in the past. The Park Strait in north and the Gulf of Mannar in the west separates it from the mainland of India. Colombo is its capital city. There are total 104 rivers in this small island country. River Mahaveli is the biggest river. श्रीलंका को पहले हम सिलोन या सिहल द्वीप के नाम से जानते थे। पार्क स्ट्रेट जो नॉर्थ में और गल्फ ऑफ मन्नार जो वेस्ट में है, उसकी वजह से ये इंडिया की मेन लैंड उससे अलग है। कोलंबो उसका कैपिटल है। यहाँ पर 104 नदियाँ हैं, जबकि यह एक छोटा सा आइलैंड है। रिवर महावेली यहाँ की सबसे बड़ी रिवर है। पेज नंबर 121. It experiences hot and humid climate because of its nearness to the equator. The main agricultural product is rice and tea. It is known as the Ratnadweep or the Pearl of the Indian Ocean. People speak Sinhali and Tamil. ये इक्वेटर के पास है, इस वजह से यहाँ पर गर्मी भी बहुत होती है और ह्यूमिड नमी भी बहुत होती है। राइस एंड टी इसकी मेन खेती है। इसको हम रत्नद्वीप भी कहते हैं या पर्ल ऑफ इंडियन ओशन कहते हैं। यहाँ के लोग तमिल और सिंहाली भाषा बोलते हैं। म्यांमार, it is the land of Arakan mountain ranges and the Irrawaddy river. Myanmar produces mineral oil and India purchases it. Because of the adverse climate, industries have not developed much here. Its capital was Rangoon and now Naypyidaw is its capital. Waterways are more important in Myanmar. It produces rice in abundance. म्यांमार पर चारों तरफ अरक्कन माउंटेन रेंजेस है और जो नदी बहती है वो है इरावदी। ये जो है मिनरल ऑयल प्रोड्यूस करता है और इंडिया ऑयल परचेस करता है। क्लाइमेट अच्छा नहीं है, इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा
इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाई हैं। पहले उसकी कैपिटल रंगून थी, पर अब नियापिडाओ उसके कैपिटल है। वाटरवेज बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा राइस चावल की खेती होती है। So students, here we have completed this chapter, and with this we have completed our second semester portion. So for homework, you have to write the answers of this chapter in your workbook.